बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम Bismillahirrahmanirrahim. Now, today we want to discuss a topic of cardiology, which is the most important and hot topic. You can tell that it is the hot issues in the world. Most of the people of the world, they usually terrified from one disease, and that is the heart disease. Now the mortality in the world, this is the second highest cause of the mortality after the traumatic deaths. That is the cardiac diseases. And all of the cardiac diseases, the most horrifying and most gratifying and most complicated type of heart diseases are called the ischemic type of heart diseases. And in an ischemic type of heart diseases, even the most important issue in the whole world is the acute chest pain, and acute chest pain leading to the myocardial ischemia, that is ischemic heart diseases. Because of the constellation of the ischemic heart diseases, there are, the heart is supplied by the three main vessels. On the lateral wall is supplied by the lateral circumflex artery. The anterior wall is supplied by the anterior descending artery. And these two are driving from left coronary artery. The right coronary artery itself is supplying the inferior wall, which is a big wall. It is not a small wall. It is lying on the just above the diaphragm, very thick wall. These vessels are communicating with each other as the age grows, and those people who are conscious of this disease and they do the lifestyle modifications, specifically speaking the daily exercises, these vessels communicate with each other in enormous amount. Even the epicardial vessel. What are epicardial vessels? Epicardial vessels are the vessels which are supplying the pericardium. And even the exocardiac vessel, means the vessels which are not supplying the pericardium at all, they even communicate with the vessels of the heart. This is very unique phenomena given by the God. So if the one vessel is blocked, the other part is able to supply. So the patient can be survived. In those people who has got very less communications between the vessels, there are more chances of sudden death. We see very young people die with these diseases. So I am talking about the acute coronary syndromes, and I myself introducing as Professor Syed Ali Haider. I am actually visiting professor of medicine at Sindh Medical University. In the hall, lecture hall, to give this lecture is very easy because everybody is in my eyes. Without the presence of the students, it is very difficult for the feedback, whether they can understand what I am talking about. The basics which I have just given in front of you previously are very, very important. अपने दिमाग के अंदर फिक्स कर लें ये बात.
अगर आपको नहीं आता दी ब्लड वेसल्स कौन सी हैं हार्ट की, कौन सी एरिया सप्लाई होता है और किस तरीके से वो मॉडिफाई होती हैं आपस में, किस तरह से कम्युनिकेट करती हैं, उस वक्त तक आप ये समझ ही नहीं सकते. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे नो ओनली वन थिंग, दैट इज एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. बट डेथ हो गई किसी की एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. So in most part of the world, this is a confusion is going on. Patient survives from the acute myocardial infarction, not surviving from the acute myocardial infarction. The problem is this: to diagnose the condition. The patient is presenting mostly, in most of the cases, with a very severe type of a pain in the chest, central chest pain, which is retrosternal in origin, and it is heaving in character. Most of the part. But it is not necessary that the central part is involved. It may be a little part may be involved. Even the pain cannot occur, which is called the non-ischemic type of the acute coronary syndrome. And it is a non-painful, painless ischemia, painless ischemic syndromes, which can occur in diabetics and in leprosy and in neuropathies. So a big confusion occurs. The patient is presenting in front of you, in most of the cases, the chest pain, which may be very typical. It may compromise the cardiovascular and respiratory system. It is possible with the other associated symptoms. It may not be associated with anything, only the breathlessness. So breathlessness is maybe the presenting complaint. Even very severe bradycardia, which was not occurring before, may be the presenting feature of the acute coronary syndrome. So this is a confusion occur in the whole world, because the world is a very big one. There are 5 continents, and the casualty department dealing with these type of problems daily. So they are using this word acute coronary syndrome because they are not sure about it, what type of problem is going on in the heart. They said that it is ischemic heart disease, but only because they have diagnosed on the basis of the presenting complaints and on the electrocardiogram. They are not sure about it. The terminology is therefore invented is acute coronary syndrome. Now see how it occurs. First of all, the thing is the basic thing is atherosclerosis. And atherosclerosis occurs because of many factors. Because of the brunt of the blood on the lateral wall, because of the deposition of the LDL cholesterol between the tunica media and tunica intima, because of the HDL, which is the scavengers to remove the LDL, is not present, because of the triglycerides, which are very higher, and it causes the higher viscosity, and it is also converting into the LDL. Again, it will cause atherosclerosis. The basic problem is atherosclerosis. First of all, a foam cell is formed. You see under the microscope. Then it enlarges. And a plaque, it is known as plaque. It bulges inside the lumen. It increases in size. When this plaque is so much so, it is increasing in size, there is compromisation of the blood inside the heart. And it can cause what is called angina pectoralis. It may be a stable angina pectoralis. It may be severe angina pectoralis which is not managed by the drugs. If this plaque ruptures suddenly and there is a blockage of the vessel, or more than 90% is blocked,
and the other vessels are not communicating distally, then there is severe ischemia occur distal to the event. And this severe ischemia will cause three types of problems on the basis of the electrocardiography. On the basis of the electrocardiography and on the basis of the clinical features, one can divide into the ST elevation myocardial infarction. It is non-ST elevation myocardial infarction, or it may be unstable angina. The fourth one is called Prince-Metals angina, variant angina, which is not included now in ACS, but it will be included very, very near. So the thing is, the coronary artery disease, I already mentioned out, it is the leading cause of the morbidity and mortality in most of the industrial nations, now in the developing countries also. In the South African perspective of the coronary disease, the world in one country. A world in one country. What do you mean by this terminology? Means that this is the disease which is in the mind of the people. If something happening to them, they are relating the disease to one, and that is, it is heart disease. So the terminology is using is acute coronary syndrome because they are not sure about it. Whether it is STEMI or NSTEMI, or whether it is unstable angina. A constellation of symptoms related to the obstruction of the coronary arteries, with chest pain being the most common symptom. And additional symptoms are nausea, vomiting, diaphoresis, etc. Chest pain concern for the ACS is maybe related to the upper part of the chest, to the neck area, to the jaw, to the back, and to the even right side can be involved of the chest, associated with the nausea and the vomiting. It may be a typical, very, very typical type of the pain. That is, I said, the heaviness in the chest. ऐसा लगता है जैसे मनो बोझ रख दिया गया हो सीने के ऊपर. High risk population for this disease, that is coronary artery disease, in the Indian and white and the colored peoples. The increasing rate in the black population are lifestyle or socio-economical changes and urbanization. But the only thing I already mentioned out are the non-practicing of the lifestyle modification. जहाँ चाह खा लिया, जैसा चाह खा लिया, नॉन सीडेंटरी हो गए, घर में बैठे हुए लोग, कोई काम काज नहीं है, अगर कर रहे हैं तो कुर्सी पे बैठ के काम कर रहे हैं. These are the problems. They don't think that the junk foods or fast foods are the killers. They don't know the what are called beverages, the cold drinks. They are poisons. They are not only destroying the vessel's wall, but they are actually causing other diseases as well. It is a poison. So it means that rather than going for the thing, if the vessel is compromising, and it may be reversible with the drugs or with the rest, ischemia occurs. This is called the stable angina pectoralis. If it is not, then there are three types of the problems. That is, it may be non-ST-EMI or NST-EMI, or it may be unstable angina. According to the Canadian Cardiovascular Society, the classification of angina is class 1 is no pain with ordinary physical activity. Class 2 is slight limitation of the physical activity. Pain occurs with walking, climbing, stairs, stress. Class 3 are the severe limitation of daily activity. Pain occurs on the minimal exertion.
And the class 4 are the unable to conduct any activity without a pain. Pain at the rest. These are the classes which are for the Canadian cardiovascular, and it is accepted by the American Heart Association as well. And other countries also accept this classification. And depending upon this classification, the management strategies are planned. Now this will be discussed in the final year, because here it is very difficult to understand. Only thing is there is a classification of the pain, that is angina. Whether it's class 1 pain or class 2 or class 3 or class 4, you have to classify that patient. In the same way, the breathlessness is described by the New York Heart Association, NYHA class 1, class 2, class 3, class 4. It is also applicable with this classification. I usually follow as a clinical cardiologist the NYHA classification rather than the Canadian classification. The first terminology, which is unstable angina. Unstable angina is the pain which is occurring at the rest. Duration is more than 20 minutes within 1 week of the first visit. It is the first time pain the person is experienced. The first time angina is unstable angina. It means that. Or new onset angina with class 2 severity is very painful, onset within the last 2 months. Or worsening of the chest pain increased by at least class 1, the pain was there on exertion, now increases in frequency and duration. It is change in character, it is change in frequency, the duration is more. It is unstable angina. An angina becoming resistant to the drug that previously gave good control. For example, the glycide nitrate you have given 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 drugs after 10 minutes of period, and there is no relief of the pain. Note before that in an electrocardiogram, it may be normal in the early hours. Only ST depression can be seen in some cases, and TBF changes can be seen. Otherwise, atypical electrocardiographic changes occur with this type of a chest pain. In acute myocardial infarction, जिनको आप कहते हैं AMI, it is only dependent on the electrocardiogram. If there is ST elevations in lead V1 and AVL2 additional leads, it is lateral wall which is involved. And in 2 and 3 and AVF, at least 2 leads are involved. It is the inferior wall, myocardial infarction. And if it is V1, V2, V3, V4, V5 or V6, anterior wall. So it may be the J point of the ECG is, if it is above the neutral line, it is called ST elevation. If J point is lower down to the neutral line on the ECG, it is called ST depression. So it may be the ST elevation myocardial infarction and non-ST elevation myocardial infarction. So acute myocardial infarction is of 2 types. So there are 3 types of acute coronary syndrome, 3 variants. One is unstable angina, second one is non-ST elevation myocardial infarction, and third one is the ST elevation myocardial infarction. Why it is important to recognize the patient with unstable angina, the first one, which I am talking about. Because of the 5 to 17% suffer and the myocardial infarction within a week after admission. If you will not interrupt this condition, it will go into the STEMI or NSTEMI. 3 to 15% die within 1 year. The mortality of the disease is high with unstable angina if you will not interrupt and further investigate and further manage. Already I have discussed the
acute coronary syndrome pathophysiology, how the vessel is blocking. Now, progressively blocking is seen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Blocking by 40%, 50%, 60%, 70% to 80% to 90%. Is already discussed previously by when I started my lecture. Now, approach to the patient is that identifying those with the chest pain suggestive of ischemic heart disease or acute coronary syndrome. Thorough history required. Character of the pain should be described. Onset and duration, location and radiation, aggravating and relieving factors, autonomic symptoms. ये सारे आप जो है ना हिस्ट्री टेकिंग में पढ़ते हैं. हिस्ट्री टेकिंग आती ही नहीं लोगों को सही तरह से, कैसे लेते हैं इसको सीखें. ये आर्ट है, याद रखिएगा, क्लिनिकल आर्ट है ये. After 43 years of my experience, I had taken more than 25,000 histories probably. तो जितना हिस्ट्री लेंगे आप उतना आप एक्सपर्ट बन जाएंगे. Now typical versus atypical history. There are certain features which are very typical with the chest pain. मिसाल के तौर पे वॉमिटिंग हो रही है, डायफ्रोसिस हो रहा है, and pain is radiating to the jaw. For example, it is very typical. एटिपिकल ये कि उसको जो है तो पेन का कैरेक्टर जो है वो हैवीनेस वाला नहीं है, बल्कि शार्प है, पियर्सिंग पेन है, बहुत ज़्यादा है द सेंट्रल पार्ट ऑफ द चेन ऑफ द चेस्ट. इट इज़ एटिपिकल. और राइट साइड पे हो रहा है देयर इज पेन, और खाली जो है ना लेफ्ट हैंड में हो रहा है या शोल्डर में हो रहा है, लेफ्ट शोल्डर में हो रहा है. ना दिस इज एटिपिकल टाइप ऑफ हिस्ट्री. To differentiate it, it is previously described in my other lecture. How will you differentiate between the suggestive of the angina, means that ischemic heart disease, or less suggestive of ischemic heart disease? The type of the pain in the ischemic heart disease is dull and the pressure and crushing pain. But in non-ischemic, it is sharp, stabbing, pointing type of a phenomena. वो पॉइंट करके बता देगा यहाँ चुभन हो रही है. ये पेन जो होता है इस्कीमिक हो ही नहीं सकता. या बर्निंग हो रही है, खाली आग लग रही है, उसका चांस कम है. ना ड्यूरेशन 2 to 5 minutes एंड लेस देन 20 minutes. इसी में फैसला हो जाना है इन केस ऑफ इस्कीमिया. तो नॉन इस्कीमिक पेन सेकंड में आया, सेकंड में गया, या फिर ये कि वो चलता चला जा रहा है. ना आवर्स 4 घंटे हो गए आदमी है फिर भी ठीक ठाक है, या दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, पेन जा ही नहीं रहा. ये नॉन इस्कीमिक होगा, इसके चांसेस कम हैं. ऑनसेट इज ग्रेजुअल, इट इज़ ग्रेजुअली माउंटिंग पेन हमेशा होता है. एकदम दर्द शुरू हुआ, हैवीनेस बढ़ी और बढ़ी और बढ़ी. इट इज इस्कीमिया, इस्कीमिक पेन मोस्ट प्रोबेबली. वेरी रैपिड पेन. अभी बैठा था, अचानक जो है ना उन्होंने कहा कि हाय मैं मर गया और मुझे छुरी मार दी किसी ने सीने के अंदर. दिस इज लेस likely to be ischemic. The location is concerned substernal, retrosternal. It is not tender to palpation. In cases of the non-ischemic, the lateral chest wall or wall, it is tender to palpate. Tenderness is there. Pointing phenomena, यानी यहाँ पेशेंट जो है अपना खुद पॉइंट से बताएगा, उंगली रख के बताएगा कि यहाँ दर्द हो रहा है. उधर आप दबाएंगे तो डेफिनेटली वो टेंडर होगा, तो वो नॉन इस्कीमिक हो सकता है. चांसेस यही है कि वो इस्कीमिक नहीं होगा. ना रिप्रोड्यूसिबिलिटी इज कंसर्न विद एक्सर्शन. अगर उसको बोलेंगे आप चलें ज़रा सा तेज़ तो ये बढ़ जाएगा. एक्टिविटी से, इस किस्म की एक्टिविटी जो मैंने बताई अगर उसके ज़रिए बढ़ जाएगा. पर नॉन इस्कीमिक पेन ये जो होगा या तो गर्दन मोड़ने से, मूवमेंट करने से, अपनी पोजीशन चेंज करने से, ब्रीदिंग इंस्पायर ज़्यादा ज़ोर से करें, उसमें ये पेन बढ़ जाएगा. ये एक्सर्शन से नहीं बढ़ता नॉन इस्कीमिक पेन. ऑटोनॉमिक सिम्टम्स जो है द प्रेजेंट यूजुअली नोजिया, वोमिटिंग, डायफ्रोसिस, palpitations. But in cases of the non-ischemia, they are usually absent. This type of
associated symptoms are not present. ये हो सकता है कि पेन हो उसको, इन एपिगैस्ट्रियम में बर्निंग हो रही हो, उसको रिफ्लक्स हो रहा हो, इट इज़ पॉसिबल. रिमेंबर इन दी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीजेज जो होती हैं, जो एक्यूट प्रेजेंटेशन होता है, तो उसको to differentiate with acute coronary syndrome is one of the most difficult job according to the New York hospital. दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है न्यूयॉर्क हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल. वो ये कहते हैं बहुत डिफ़िकल्ट है, इन दोनों को अलग करना बहुत मुश्किल काम है. जब उनको करना मुश्किल काम है तो फिर दुनिया में दूसरी कौमें कैसे करेंगी डिफ्रेंशिएट. इसीलिए उन्होंने एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम नहीं है. Now, atypical pain, risk factors for developing atypical pain are diabetes, females, non-white patients, elderly, dementia, no prior history of myocardial infarction, atypical symptoms like GI symptoms, syncope, slightly shortness of breath or pleuritic positional pain, chest wall tenderness, no chest pain symptoms. Now, these are the studies which have been done. But there are certain, I already mentioned out, there is called painless myocardial ischemia, in which there is no pain at all. It occurs usually with the diabetics or with the neuropathic pain, neuropathies, in herpes, in leprosy. You will not feel pain. Painless myocardial ischemia is very difficult to diagnose as ACS. Now, risk stratifications should be there, should be reasons. Genetic history इसकी है, provides prognostic information. Family history है, उसकी age क्या है, what type of a job he is doing, what type of habits he has, determine the treatment level of intervention, help decongest the emergency department. भाई ये कि जमा होते चले जा रहे हैं लोग, आप इतने सारे बेड नहीं रख सकते, इसलिए आपको अलग करना पड़ता है कि टिपिकल है या एटिपिकल है. तो रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन शुड बी ऑनगोइंग एट एडमिशन टू 6 to 8 hours एंड 24 hour डिस्चार्ज. अभी भी किसी को चेस्ट पेन होगा वो आपको एडमिट कर लेंगे, वो 6 to 8 hours एंड दे हैव टू एक्सक्लूड द एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम. अब ये कि आपके पास जो है ना वो बल्क ऑफ द पेशेंट जमा हो जाते हैं उसमें. अगर आप बहुत अच्छा आपको आता है नॉलेज तो आप उसी वक्त वो फैसला कर लेते हैं जब भाई ये एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है या ये नहीं है. अदरवाइज यू हैव टू एडमिट फॉर 6 to 8 hours up till 24 hours in sometimes and you have to occupy the bed. इसलिए सर्टिफिकेशन निकाली जाती हैं टू मैनेज इट. The tool we use for this risk certification are history, ECG and biochemical markers. हिस्ट्री मैंने पहले बता दी आपको क्या प्रेजेंटेशन है, हाउ दे प्रेजेंट. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पढ़ना आना चाहिए, असल मसला वही आता है. तो फर्स्ट जब ये होता है, जब अटैक होता है इसमें मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में, तो शुरू के आवर्स जो होते हैं उनमें ज़रूरी नहीं है कि चेंज आ जाए, उसमें टाइम लगता है. इसमें अभी हाफ आवर, इट में भी 1 hour. इसीलिए क्या है कि वो हाफ आवर हर 15 मिनट्स के बाद जो है ना वो 12 लीड ECG करते रहते हैं, 4 से 6 घंटे तक करते रहते हैं और चेंजेस देखते रहते हैं, और मॉनिटर भी वो लगा हुआ होता है. इसकी स्पेसिफिसिटी 90% है, याद रखिए, एंड सेंसिटिविटी 60% है अगर एक सिंगल किया गया है. लेकिन अगर आपने सीरियल किए हैं तो स्पेसिफिसिटी इसकी 100% हो जाएगी और सेंसिटिविटी 80% से ज़्यादा हो जाएगी अगर सीरियल ECG हो. तो इन दिस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यू सी द 12 लीड ECG. ये नहीं है कि खाली एक मॉनिटर लगाया, उसको चेक किया और छोड़ दिया, ऐसे नहीं होता. मैंने कहा ना हर 15 मिनट में ECG को रिपीट करें. आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है चलो आधा घंटे के बाद कर लें. जिस वक्त फर्स्ट आप ECG करेंगे उस वक्त ही आपको एंजाइम भेजना होता है, कार्डियक एंजाइम. फिर उसके बाद 1 hour के बाद भेजना होता है, ये सेकेंड एंजाइम होता है. उसके बाद जो है ना वो थर्ड एंजाइम जो है वो 2 hours के बाद भेजना होता है.
तो 3 एंजाइम्स तो आपको लाजमी तौर पे भेजने नहीं चाहिए अगर आपके पास फैसिलिटी हैं. इन अमेरिका 4th एंजाइम विल ऑल्सो बी गिवन आफ्टर 4 आवर्स. 4 घंटे बाद वो एक और एंजाइम एस्टिमेशन के लिए भेजते हैं, कार्डियक एंजाइम. बट इन आवर situation, because of the cost effectiveness, we usually do two enzyme. One at the time of the admission in the emergency and after 1 hour. Now this is the electrocardiogram. You see here the 2 and the 3, and in AVF these are the inferior wall leads. The clear-cut ST elevation is seen. This is the STEMI, ST elevation myocardial infarction of the inferior wall, and their reciprocal changes are seen in V1, V2 and other leads as ST depression. Another ECG which is shown here is only showing the ST depression in V2 and V3 and V4 and V5. Anterior wall, it is ST depression of more than 4 millimeter. Patient comes to you with acute chest pain, with diaphoresis, with a typical presentation. But on electrocardiogram there is no ST elevation. Rather, ST depressions and atypical changes are seen. This is known as the non-ST elevation myocardial infarction. अब इन दोनों कंडीशन के अंदर अगर एंजाइम पॉजिटिव आ गया तो ये कंफर्म्ड हो जाएगा. कंफर्मेशन शुड बी देयर. देखिए, आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए. 3 में से 2 भी अगर आपके पास हो जाती हैं तो आप डायग्नोसिस बना सकते हैं. नंबर 1, द टिपिकल क्लिनिकल फीचर्स. नंबर 2, द एविडेंस ऑन द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. एंड नंबर 3, द पॉजिटिव कार्डियक एंजाइम. इनमें से कम 2 होनी चाहिए, तब डायग्नोसिस बनेगी मायोकार्डियल इन्फेक्शन की. अदरवाइज नहीं बनेगी, एक से नहीं बनेगी. Now the enzymes enzymes जो है ना, वो तो 50 साल से enzymes. When there is of course necrosis of the myocardium, it will release an enzyme which is present inside the myocardial fibril. उसमें serum myoglobin is the first one which is released. और उसका स्पेसिफिकली जो है CKMB है. इसका CKMB1 होता है, CKMB2 भी होता है, और उसका रेशियो भी निकालते हैं. फिर कार्डियक स्पेसिफिक ट्रोपोनिन्स होते हैं. ट्रोपोनिन I होता है और T होता है. अभी न्यू मार्कर्स भी इन्होंने दरियाफ्त किए हैं, कुछ कार्डियक मार्कर्स, कोलेजन मार्कर्स हैं इनके, और दूसरे मार्कर्स हैं जो मायोकार्डियम फिब्रिल होता है वो रिलीज कर रहा होता है. बट बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंट्रीज द फैसिलिटीज आर नॉट अवेलेबल and there is a discrepancy between the workers. The most important enzyme which we do usually are troponins, troponin T or troponin I. You see in this diagram how the myocardial ischemia occurs, and these enzymes are raised. Myoglobin raised, the creatine phosphokinase raised, CKMB that is, which is raised, the troponin are raised, and they rise for even many days. Troponin I can be elevated up till 14 days. Troponin T can be elevated up till 10 days. यानी ये आपको मालूम चल सकता है अगर 2 हफ्ते पहले भी अगर अटैक हुआ है, तो अगर आप करा लें कार्डियक स्पेसिफिक ट्रोपोनिन I को और ज़्यादा आ जाए, तो ये पता लगा लेगा कि हाँ, इसको 1.5 हफ्ते पहले मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ था. अब ये पेशेंट ने ना मैनेजमेंट ही नहीं कराया, वो घर में पड़ा रहा. सो तो ट्रोपोनिन T and I said already about it. Myoglobins are non-specific enzyme. CKMB again can occur in other conditions as well, although it is specific, not very specific, but specific you can say. The marker change scores
what is called the 2-hour delta CKMB mass. 2 आवर के बाद जो है ना उसका CKMB का टोटल मास निकाला जाता है कि कितना है. ये स्कोरिंग सिस्टम है इन लोगों का जो करते हैं, लेकिन यहाँ नहीं करते, पाकिस्तान में इसको नहीं करते. तो सीरम मार्कर्स देख लेते हैं, उनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं और वो डायग्नोसिस बना देते हैं. बट इन आवर कंट्री वी डू ओनली दिस थिंग्स. दैट इज टिपिकल presentation. Number 2, electrocardiogram, and number 3 are the cardiac enzymes. बहुत सारे मैंने आपसे कहा ना कि ये जो है ना जितने भी लिखे गए हैं, माइलोपेरोक्सीडेज, सॉल्युबल, CD40 लिगैंड, इंटरल्यूकिन 6 एंड हाईली स्पेसिफिक CRP और D डाइमर और प्रोथ्रोम्बिन वगैरह वगैरह, दे आर नॉट अवेलेबल. नंबर 1. नंबर 2, दे आर वेरी वेरी कॉस्टली. 2. थर्डली ये है कि डिस्क्रिपेंसी है इसमें आपस में, वर्कर्स की डिस्क्रिपेंसी है. वो कहते, कुछ लोग कहते हैं कि 100% ये सब में आएगा, कुछ लोग कहते हैं नहीं 100% स्पेसिफिसिटी, इसकी सेंसिटिविटी नहीं है. तो इसमें जो है ना वो डिस्क्रिपेंसी है. नाउ दिस इज द डायग्राम अगेन. आई हैव शोन हियर अगेन द acute phase reactants they are releasing because of the damage to the vessel wall. ये सारे के सारे जितने भी अभी आपको बताए हैं, ये तो मैंने आपको बताया मायोकार्डियम से निकले हैं, लेकिन जो खुद वेसल वॉल डैमेज हुई है उधर से भी तो कुछ निकल रहा है. तो वहाँ से एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे. जैसे CRP है, ESR है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है, फाइब्रिनोजेन है, सेलुलर प्लाज्मीन है, दे ऑल विल राइज. They are parallel with the cardiac enzymes. Now they are also doing in some cases BNP, the basal, the brain natriuretic peptide or atrial natriuretic peptide level, but ये non-specific है. It can occur in other conditions as well. Now this is the TIMI risk score. जिसको हो गया है इंक्रीज विद इंक्रीजिंग मोर देन 40% अगर आएगा तो ऑल कोज मोर्टेलिटी 14 days रिक्वायरिंग अर्जेंट रिवर्सकुलाइजेशन. किसको करना है रिवर्सकुलाइजेशन, किसको रिवर्सकुलाइजेशन नहीं करना है, उस पर टिमी रिस्क स्कोर निकाल लेते हैं और पॉइंट स्कोरिंग करते हैं. इसकी एज 65 years हो 1 point, मोर देन 3 कोरोनरी आर्टरी डिजीज रिस्क फैक्टर्स हों, जैसे मिसाल इंक्रीज LDL कोलेस्ट्रॉल, लो HDL, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, नॉन CAD को पहले ही से डायग्नोज है केस, स्टेनोसिस of more than 50%, and the acetyl salicylic acid used in the past 7 days. पहले से जो था वो खा रहा था acetyl salicylic acid because of the some problem he was facing. प्रेजेंटेशन ये कि रिसेंट है 24 आवर में सीवियर एंजाइना है, एंजाइनल पेन है टिपिकल 1 point, इंक्रीज कार्डियक मार्कर्स 1 point, ST elevation which is more than 0.05 millivolt, हाफ मिलीमीटर भी अगर वो डाउन हो जाएगा तो ST यानी अगर हाफ मिलीमीटर डिप्रेशन हो जाए तो दिस इज ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट. इन द सेम केस द ST एलिवेशन का ज़्यादा ताल्लुक है कि वो जल बनता है, इट शुड बी मोर देन 5 millimeter मोस्ट ऑफ द केसेस. 5 millimeter से कम है तो डाउटफुल है, 5 millimeter से ज़्यादा है, 7 millimeter है, 8 millimeter है, ये सिग्निफिकेंट ST एलिवेशन है. इसका 1 point है. The management is very, very important. Remember, the non-ST elevation myocardial infarction and the unstable angina will be managed on the same grounds. Number 1, you have to admit this patient, to reassure this patient. Number 3,
you will give oxygen to this patient. Number 3, to reduce the pain, you give the morphine. Number 4, you give intravenous nitrites. You will give oxygen to this patient. You will give intravenous heparin to this patient. And if heparin is not available, you give the enoxaparin and other anticoagulant can be used. And admit this patient and see the condition, clinical. Definitely the pain will improve, the condition will improve. Both cases, in cases of unstable angina and in cases of the non-ST elevation myocardial infarction, in both cases you will do the same. According to the American Heart Association, now they will do angiography just afterwards. और उसी पर सेटल करते हैं कि करना क्या है. Whether they will do the coronary angioplasty or they will do the open heart surgery for the CABG. But in Britain वो इस तरह नहीं करते, वो रेस्ट देते हैं 2 to 3 weeks and they do afterwards the exercise tolerance test और thallium scan और फिर confirm करते हैं how much heart is damaged, what are the condition of the vessels, and they do coronary angiography afterwards. And they decide afterwards. This is the difference between the management from the American sources and the British or European sources. Now, the management which I have just elaborated in front of you, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, is shown in this diagram. In the non-ST infarction or unstable angina, will be the same management. But in cases of the ST elevation myocardial infarction, the guidelines are different. First of all, remember, any chest pain of ACS should be managed on the emergency measures. Number 1, reassure this patient. Number 2, you give the aspirin or clopidogrel. At least you will give to this patient double the dose. That is, it should be given at least 300 milligram under the tongue. Under the tongue रखने वाली दवाएं बहुत कम हैं. This is the condition you can give under the tongue. Number 3, you will give the patient to reduce the pain. To reduce the pain, you give the morphine. अगर morphine नहीं है तो tramadol. You give the glyceride nitrate under the tongue. हर 5 minutes में 3 minutes में आपको देनी है. ऑक्सीजन थेरेपी देनी है. और साथ साथ अगर पॉसिबल हो सके और पेशेंट नॉर्मोकार्डिया है पेशेंट को या टैकीकार्डिया है तो मेटाप्रोलोल विल बी गिवन 5 मिलीग्राम इंट्रावेनसली या टैबलेट अगर है तो 50 मिलीग्राम अंडर द टंग. ये हर एक को देनी है जिसको भी ACS आप सपोज कर रहे हैं. ये इमरजेंसी मैनेजमेंट एट योर होम है या इमरजेंसी मैनेजमेंट एट द प्राइमरी केयर है. जब वो देख लेते हैं, एम्बुलेंस को कॉल करते हैं और बुला लेते हैं, फिर वो हॉस्पिटल में चला जाता है तो वहाँ ये डिसाइड हो जाता है कि ये NSTMI है, ये अनस्टेबल एंजाइना है या STEMI है. क्योंकि प्रीवियसली आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ द NSTMI एंड द अनस्टेबल एंजाइना. लेकिन STEMI अगर हो इस पेशेंट को, reperfusion therapy should be done as soon as possible. Now, reperfusion therapy is done, number 1, pharmacological, number 2, instrumental. Now, pharmacological should be given by the fibrinolytic agents which are available, streptokinase. अगर आपके पास पैसे हैं तो you can give more than that. That is TPA can be given, teliplex with or teliplex plus antiplase, etc., etc. They can be given and they will dissolve the clot. वो जो रप्चर हुआ था वो डिज़ोल्व कर देता है. ये एक दफ़ा देते हैं. अगर पेशेंट का एलिवेशन ST एलिवेशन नीचे हो गया तो फिर आगे नहीं जाते, रुक जाते हैं. लेकिन अगर ST एलिवेशन जो है ये फिर भी बरकरार रहता है सेम टाइम और पेशेंट जो है क्लिनिकली पेनफुल रहता है तो
फिर एक और ट्रायल देते हैं, सेकंड ट्रायल। अगर ये भी फेल हो जाए तो फिर इसमें जो है प्राइमरी एंजियोग्राफी करके प्राइमरी पीटीसीए करते हैं। प्राइमरी पीटीसीए का मतलब है परकोरेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, दैट इज कॉल्ड एंजियोप्लास्टी। अगर वो फेल हो जाए तो सर्जन को कॉल कर देते हैं और ओपन कर देते हैं हार्ट को, और उसी वक्त एट दैट टाइम प्राइमरी सीएबीजी कर देते हैं, यानी कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी कर देते हैं। दिस इज हाउ दे मैनेज दी SC elevation myocardial infarction. Remember these points which I have told, they are very important to understand. And afterwards जिसको डिसाइड हो गया कि ACS था, इंक्रीज फोकस करें सेकेंडरी प्रिवेंशन पे, स्मोकिंग सेसेशन, अल्कोहल सेसेशन, डाइट मॉडिफिकेशन, बीपी कंट्रोल, डायबिटीज़ कंट्रोल, लिपिड मैनेजमेंट, एक्सरसाइजेस को प्रमोट करें। डाइट को जो है, जो बताएं आप किसी को तो बाकायदा समझाएं उसको, हाउ ही विल टेक दैट डाइट, एंड दैट इज कॉल्ड डैश डाइट। डैश डाइट का मतलब होता है डाइटरी अप्रोच टू reduce systolic hypertension. That diet is the diet which can control the acute coronary syndrome in the future. How they manage this case after the ACS? Secondary prevention will be there. और किसी को सेकेंडरी प्रिवेंशन आपने दिया और फिर भी अटैक हो जाए तो उसके बाद जो होता है वो टर्शरी प्रिवेंशन होता है, उससे हायर आपको जाना पड़ता है प्रिवेंशन के लिए। फिर आपको जो है ना ड्रग्स थेरेपी अपनी मॉडिफाई करनी पड़ती है बहुत सारी। अब ये पेशेंट जो ड्रग्स पहले कम कर चुका था, अब ये ड्रग्स बढ़ाएगा, अब इसको डबल जो है ना आपको जो है ना प्लेटलेट ब्लॉकर देने पड़ जाएंगे या आपको एंटीकोगुलेंट देना पड़ेगा फॉरएवर। और इसके साथ साथ जो है वो बिल्कुल जो है अनसैचुरेटेड फैटी, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उनको ज़ीरो कर देने होंगे। और इसकी जो है वो टोटल कैलोरी इन द पर डे कम करनी होगी, इसको वेट रिडक्शन करना होगा, इसको बहुत कुछ करना होगा। तो ये प्रिवेंट कर सकता है। अदरवाइज यू हैव टू डू अगेन द कोरोनरी एंजियोग्राफी, यू गो फॉर द थैलियम स्कैन एंड यू प्लान फर्दर वेदर यू विल गो फॉर द कोरोनरी एंजियोप्लास्टी अगेन और नॉट। ये डिसाइड करेगा आफ्टर सेकेंडरी प्रिवेंशन। इफ देयर इज अ अटैक अकर्स, you will go for the tertiary prevention, जिसको मैंने अभी आपके सामने बयान किया है। ये एक और बड़ी मुसीबत है, जो हार्ट डिजीज़ जिन पेशेंट्स को होती है वो पूरी लाइफ जो होते हैं उनको हमेशा सेकेंडरी प्रिवेंशन करनी होती है या टर्शियरी प्रिवेंशन करनी पड़ती है। तो दिस इज़ हाउ वी मैनेज दीज केसेस। द कंक्लूजन ऑफ माइन इज दैट विद द इंक्रीज बर्डन ऑफ द cardiovascular disease, the lack of the health resources, risk stratification becomes important. उनका risk stratification निकालने, take proper history and investigate. Emphasis should also be placed on the primary and the secondary prevention of this disease. Early intervention helps prevent complication, decreases morbidity and mortality. पहले से पता चला दिया, आपने उसको समझा बुझा दिया, chances of acute coronary syndrome फ्यूचर कम हो जाएंगे। द वे फॉरवर्ड इज द फुली इक्विप्ड चेस्ट पेन ऑब्जर्वेशन यूनिट होना चाहिए आपके पास, जो यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ किसी के पास भी। फुली इक्विप्ड जो है वो आप NICVD में काम करते हैं, वहाँ भी फुली इक्विप्ड नहीं है, उसमें भी कमी है, अभी मौजूदा दौर में भी कमी है। आगा खान है और दूसरे हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, लियाकत नेशनल है, उनमें भी अभी जो है ना फुली इक्विप्ड नहीं है, वो उसमें अभी लैकिंग है। तो उसको और मज़ीद बेहतर बनाना पड़ेगा। सो थैंक यू लिसनिंग फॉर दिस लेक्चर। आई हैव एक्चुअली डन द acute coronary syndrome. For the third year people, they have some knowledge about the acute coronary syndrome, या हम टर्मिनोलॉजी क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये बात उनकी समझ में आ गई होगी, और कुछ पॉइंट मैनेजमेंट के हवाले से भी आ गए होंगे। इसको बहुत डिटेल में जो है ना स्टडी अगर करेंगे तो फाइनल ईयर में इंशाअल्लाह ताला वी विल डू इट। अल्लाह हाफ़िज़।